Well, hello and welcome. Welcome to this IOQM problem solving session. Just to be clear that I'm not going to solve all the problems. मैं बस लास्ट के 15 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला I'm hoping that पहले 15 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे. They're not particularly that difficult. So I'll begin with question number 15, which says that if a by b is equal to 3 by 4 and a and b are positive integers and GCD of a and b is 1 and ऐसा कुछ दे रखा है that what's the largest value which you can take. Well, so what I want to do is that कि मैं क्या करना चाहता हूँ 3/4 minus a by b को मैं minimize करना चाहता हूँ and b is less than or equal to 15 और GCD जो है मेरे पास a और b का 1 है तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ you'll get this as 3b minus 4a upon 4b. अब देखो अगर मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ तो what I'll do is that इसके मॉड को rather मिनिमाइज करना चाहता हूँ डिफरेंस पूछा है तो मैं b को मैक्सिमाइज करना चाहूँगा और अगर b इक्वल टू 15 के करस्पॉन्डिंग कोई मेरे पास सोल्यूशन आ गया तो वे गुड. तो अगर मैं b को 15 डाल दूँ तो व्हाट यू गेट इज दैट 45 minus 4a upon 60. अब आप अग्री करोगे कि जो ये वैल्यू है 60 से ज्यादा आप नहीं बता सकते बिकॉज b इज लेस देन और इक्वल टू 15, राइट. एंड देन इसकी जो लीस्ट वैल्यू फिर पॉसिबल होगी वो ये तब पॉसिबल होगी जब ये क्वांटिटी 1 हो जाए. एंड यू कैन सी दैट फॉर a इक्वल टू 11 a की वैल्यू अगर 11 हो जाए तो ये 1 हो गया. एंड इन दैट केस a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू 15 अगर हो गई तो इनका GCD 1 हो भी गया नहीं. सो every condition is satisfied. So the question was कि a plus b की वैल्यू क्या होगी. So a plus b is simply equal to 26. All right, and that's question number 15. Move on to question number 16. 16 says that question number 16 क्या कह रहे हैं that oh yeah, so in fact Srijan sent me this paper और इसमें सब कुछ उल्टा इसमें ऐसा लिखा हुआ है. So yeah, and I can't possibly look here and here as well, so I'll look for the question in my phone. मैं अपने फोन में क्वेश्चन को देखने वाला हूँ. Yeah, so question number 16 says that, and this is for your viewing, ये आपके व्यू करने के लिए है. आप इसको देख सकते हैं that what does 16 say? Yeah, so 16 says that f of minus 2 upon g of minus 2, g of minus 2 is equal to f of 3 upon g of 3 is equal to 4. देखो इन अदर वर्ड्स, और बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि एफ एंड जी दो पॉलिनोमियल से 2 डिग्री के. इन अदर वर्ड्स अगर मैं एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाऊं which is f of x minus 4g of x, I think about it, ये भी एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा इन जनरल अनलेस f और g के कोएफिशिएंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें, राइट. ये डेलिबरेटली ऐसे बनाया गया है बिकॉज यू कैन सी दैट अगर मैंने इसको h of x ले लिया तो h of minus 2 is 0 and h of 3 is also 0 because ऐसा दे रखा है यहाँ पे. So that would mean that f of x minus 4g of x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे पास a times x plus 2 into x minus 3 आएगी. ऐसा कुछ आएगी मेरे पास. हाँ. Now अगर मेरे पास a की वैल्यू आ गई बिकॉज दो जीरोस हैं एंड f और g दो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, का डिफरेंस भी एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल ही होगा एंड therefore not necessarily by the way 2 degree polynomial होगा, like could be 1 degree, could be like actually 0 degree हो ही सकता है, but we have been given that दो रूट्स हैं इसके, right. Now उन्होंने क्या बोला है कि that g of 5 की वैल्यू it's given as rather g of f of 7 is given as 12 and g of 7 is given as minus 6. तो मैंने 7 पुट कर दिया तो this quantity becomes 12 और ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी मेरे पास -4 into g of 7 is -6 and that's equal to a into, और हमने पुट किया क्या है, पुट किया 7 पुट किया तो this becomes 9 and this becomes 4 and so you can see that this 24 plus 12 36, this is 36, तो a की वैल्यू 1 आ गई है, which means that f of x minus 4g of x की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, it's x plus 2 into x minus 3, right. एंड अब मुझे क्या किसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने, द वैल्यू दैट दे हैव आस्क्ड इज f of 5. तो आपने x को 5 पुट कर दिया एंड यू गेट f of 5 minus 4g of 5. g of 5 की वैल्यू कुछ दे रखी है उन्होंने 2,
तो दिस इज 8, और सिंस मैंने 5 पुट किया तो दिस इज व्हाट 7 इंटू 2, ऐसे ही कुछ आएगा। तो आई थिंक एफ ऑफ 5 की वैल्यू लाइक 527 एंड सो 22 कुछ की वैल्यू आ जाएगी। आई डोंट रिकॉल कि एक्चुअली ये वैल्यू आ रही थी। व्हाट आई रिकॉल इज कि जब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी तो मेरे पास कोई और ही वैल्यू आ रही थी, एज फार एज आई रिमेम्बर। बट नो दैट आई रिकॉल, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, बट या सॉल्व इट समवेयर, कहीं मैंने सॉल्व किया था 22, सो इट्स इफ यू कैन सी दैट इट्स 22, right? Anyway, so भूल गया because in some time, so right. And now I will move on to question number 17. So 17 says that uh 17 क्या मेरे पास 17 says that एक triangle ले लिया आपने ABC which is right angle at B, and ABC, this is 1 and this is 2, ये 1 है और ये 2 है, और on the side BC there are 2 points D and E, BC पे 2 points है D और E, such that ये एक स्क्वायर बन रहा है। हाँ। और ई जो है ना वो लाई कर रहा है बिटवीन सी एंड डी, ऐसा कुछ है आपके पास, और स्क्वायर जो बन रहा है आपके पास क्या बन रहा है, सो दिस डी एफ जी। अच्छा, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट जी, जी के बारे में कुछ स्पेशल है दैट इट लाइज ऑन अ सर्कल थ्रू ए विद बी ए सेंटर, मतलब ये भी डिस्टेंस जो है ना वो 1 यूनिट है। सो ये 1 है और ए जी भी 1 यूनिट है। तो पूछा है कि व्हाट्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर, व्हिच इज एरिया ऑफ द स्क्वायर इज m by n, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिस एरिया ऑफ mn इज 1, तो पूछा है कि क्या वैल्यू होगी बिला आगे कुछ है। अब देख थिंक अबाउट इट कि ये प्रॉब्लम स्पेशल क्यों है। वेल, थिंक अबाउट इट कि अगर आप 1 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये जो ऐसा कुछ आएगा, इस पे आप कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए तो एक रेक्टेंगल तो आ ही जाएगा। व्हाट मेक्स दिस प्रॉब्लम स्पेशल इज कि स्क्वायर क्यों बन रहा है, एंड दैट विल गिव अस द सॉल्यूशन। तो आई विल से कि स्क्वायर ही क्यों है, व्हिच मींस दैट द साइड्स आर इक्वल, एंड that's the only difference between any arbitrary case in this case, and we'll be done with it. क्यों? I'm going to take the side of the square as x, and I'm going to use this angle as theta. So we can see that this quantity is going to be x cot theta. This is going to be x. Uh, so this number is going to be 2 minus x cot theta. And since this is also x, तो ये quantity हो जाएगी, and this quantity is in fact x cot phi. Alright, because, and cot phi is by the way 2. Q cot phi is 2, cot phi is this upon that, so it's 2. So this is 2x fundamentally. तो अगर आप देखेंगे तो you can say that 2 minus 3x upon x is equal to cot theta. एक मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा, राइट? अच्छा, द अदर थिंग इज कि अभी तक हमने इस फैक्ट का यूज नहीं किया कि दैट दिस लेंथ इज 1 यूनिट। सो थिंक अबाउट इट दैट अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बस पाई बाय 2 माइनस थीटा ऑब्वियसली, एंड सिंस दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, 1 यूनिट है 1 यूनिट है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो पाई बाय 2 माइनस थीटा, and this angle then becomes 2 theta, right? So the length of the chord is going to be equal to देखो मैं क्या बोला कि that this angle is theta, तो this angle is pi by 2 minus theta, and since this and this side are equal तो ये भी angle क्या हो गया बस pi by 2 minus theta। हाँ, तो this angle is going to be theta, तो ये angle मेरे पास theta ही आ गया, right? or rather that's going to be 2 theta, वो 2 theta हो जाएगा because so if there is 2 theta then the length of the chord is simply 2r sin theta ऐसा होता है ना वो, so it's simply going to be 2 sin theta. Um, because this angle was 2 theta, so this length is going to be 2 sin theta. And since this was x,
तो you'll see that this is going to be x cosec theta. I think if I'm not wrong. ओके एंड तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ x की वैल्यू आ जाएगी बस 2 sin स्क्वायर थीटा, और इफ यू लाइक देन यू गेट कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ आ जाएगी, वो आ जाएगी बस 2/x। एंड वी वांट फाइंड x स्क्वायर, रिमेंबर याद रखिएगा हमें x स्क्वायर चाहिए एक्चुअली, राइट। एंड एंड दिस इज इन फैक्ट इक्वल टू 2/x माइनस 3, ऐसा कुछ है मेरे पास। एंड 2/x को अगर आपने t ले लिया, 2/x को अगर आपने t ले लिया, तो यू गेट cot थीटा इज इक्वल टू t माइनस 3 है मेरे पास, और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है मेरे पास, t के इक्वल है। And we know that 1 plus cot square theta is cosec square theta. So 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो you'll get t square, and ये माइनस t है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इनफैक्ट 6t, 6t की वैल्यू आ जाएगी ये, और 6t और इधर से भी t आ गया तो ये हो गया माइनस 7t, 9 एंड प्लस 1 ये क्या हो जाएगा बस 10, और ये वैल्यू 0 आ जाएगी मेरे पास, नहीं। सो t माइनस 2 इंटू t माइनस 5 इज 0, और t की वैल्यू या तो 2 है या फिर t की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, राइट। तो 2/x की जो वैल्यू है मेरे पास, 2/x की वैल्यू या तो 2 है मेरे पास, या 2/x की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है। तो x की वैल्यू या तो 1 है मेरे पास, या फिर x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2/5 है ना। तो अच्छा x, थिंक अबाउट इट कि अगर x की वैल्यू 1 है, यू कैन कंपेयर दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर, सो डिस्कार्ड 2, सो यू विल गेट x स्क्वायर, जो एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा व्हिच इज 4/25, that's that. And I'll move on to the next question. So the next question says that 18, yes. 18 says that fn is the remainder when n to the n is divided by 7. तो फंडामेंटली पूछा ये कि फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या होगा, लाइक दैट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट देन n की पावर n 7 से तभी डिविजिबल होगा इफ 7 इज डिविजिबल बाय n, राइट। तो जो भी t है वो 7 का तो मल्टीपल होना ही चाहिए, बिकॉज वो जीरो रिमाइंडर तभी आएगा जब n की पावर n 7 से डिविजिबल होगा। डज इट मेक सेंस? या एंड जब सो 7 का मल्टीपल होगा t, अगर ऐसा कुछ है तो अच्छा, एंड देन नेक्स्ट व्हाट, फिर और क्या जो 7 से डिविजिबल नहीं है उसके लिए क्या है, उसके लिए विल हैव फर्मा's थ्योरम। इफ 7 doesn't divide n, then I'll say that n to the power 6 is congruent to 1 mod 7, obviously. Oh, so we're done because हमने बोला कि n t 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ से आ रहा है कि जिन नंबर्स के लिए 7 डिवाइड नहीं कर रहा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए पीरियड लाने के लिए, तो इसका मतलब वो 42 का मल्टीपल होना चाहिए, therefore the answer must be 42. It was that easy actually, अगर आप फर्माज थ्योरम जानते हैं तो। Yeah. In fact, this problem is related to the ideal of a set. ये प्रॉब्लम आइडियल ऑफ ए सेट से रिलेटेड है, सो ऑन, बट हाँ मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। सो या सो दैट्स दैट। नाउ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पे। इट सेज दैट MTAI is a parallelogram MTAI is a parallelogram and the area of is 40 by 41 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया जो 40 by 41 स्क्वायर यूनिट से MI को अगर इन्होंने बोल रखा है कि P है, तो MT जो है वो 1/P है। फिर पूछा कि द D इज द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द डायगोनल MA। तो D स्क्वायर की वैल्यू A/B होगी, ब्ला ब्ला, और ये सब पूछा कि क्या होगा।
जीसीडी ऑफ ए और बी 1 है, तो मोड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ। अच्छा देखो, द फर्स्ट थिंग इज कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज हाफ दिस इनटू साइन ऑफ दिस एंगल। अब इन दोनों का तो प्रोडक्ट 1 है, नॉट हाफ, आई एम सॉरी, it's this into sine of this angle, simply modulus of the cross product. So इन दोनों का तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मतलब साइन थीटा, अगर मैंने इस एंगल को थीटा ले लिया तो इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट्स गोइंग टू बी सिंपली 40/41 विच इज इक्वल टू द एरिया, है ना। एम की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है, तो अच्छा देखो, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज सिंपली गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा, ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा। एंड द ऑब्वियस थिंग इज, ये जो मैं क्या यूज करने वाला हूँ, सो इफ दिस पी देन दिस इज पी, इस लेंथ को मैंने डी ले लिया, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज कोसाइन रूल, तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा वो किसके इक्वल होगा, माइनस कॉस थीटा, एंड बाय द वे माइनस कॉस थीटा इज गोइंग टू बी सिंपली माइनस 9/41, ये आप चेक कर सकते हैं, लाइक अगर कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू ये है तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 40 स्क्वायर बाय 41 स्क्वायर, ऐसे ही कुछ आएगा आपके पास, है ना, समथिंग लाइक दैट। सो अब चेक कर लीजिए कि ऐसा कुछ आ जाएगा, सो दैट्स इक्वल टू, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज कोसाइन रूल, कोसाइन रूल बताएगा मुझे कि दैट पी स्क्वायर प्लस 1 upon p square minus d square upon 2 into p into 1 by p, which is simply 2, and this is minus 10/41। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1/p² माइनस और प्लस 18/41, आई थिंक ऐसे कुछ आएगा। एंड यूजिंग एम जी एम इनइक्वालिटी और वट एवर यू थिंक, और यह स्क्वायर कंप्लीट करके, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 18/41, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, और वैल्यू क्या पूछी है इन्होंने, हाँ मोड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू पूछी, सो दिस इज व्हाट 82 and this is 100 upon 41, so what 60, so difference पूछा है, so that's going to be 59, so that's the end of first session, and before I go, so here's my book, the Olympiad Companion, and you can order this book from Narosa, ये Olympiad के लिए ही है in fact, and you'll find that अगर आप इसको ठीक से करके जाते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो आप आसानी से सॉल्व कर पाते, राइट। ओवर टू सेशन 2।